Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the classification of angiospermae. So let's move to the classboard. So dear students, classification of angiosperms. So in the previous lecture we have discussed the life cycle of angiosperms. So hopefully it will be clear to you. So now the classification. अब जो angiosperms हैं, they are further, चूँकि angiospermae it's a class. It is subdivided into two subclasses. Clear? The angiospermae class angiospermae is subdivided into two subclasses on the basis of cotyledons. On the basis of cotyledons. Number one is monocotyledony. Having one cotyledon, and the second subclass is dicotyledony. Di means two, mono means one. Clear? Having two cotyledons. Having two cotyledons. Clear? तो डियर स्टूडेंट्स आप इसमें देखते हैं कि वर्ड इस्तेमाल हुआ कोटिलेडन्स का. होपफुली आपका पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. मैं मज़ीद थोड़ा सा उसको पॉलिश कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि कोटिलेडन्स क्या हैं. सो हियर इज व्हाट इज कोटिलेडन. तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इन flowering plants, the seed have embryonic leaves. Embryonic leaves called cotyledons. Clear? And upon germination, upon seed germination, they form first leaf. क्लियर? द फर्स्ट लीफ. ये एम्ब्रियोनिक लीव्स हैं जो कि सीड के अंदर मौजूद होते हैं, और जब सीड जर्मिनेट करता है तो पहला पत्ता जो बनता है, फर्स्ट लीफ, उसको हम कहते हैं कोटिलेडन. लाइक दिस इज a seed
लेट्स सपोज कि एक सीड है और इसके अंदर एक ही कोटिलेडन है, लेट्स सपोज। सो जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये सीड कोट रप्चर होगा और इसमें से निकलेगा द फर्स्ट लीफ। सो दिस फर्स्ट लीफ इज कॉल्ड कोटिलेडन। जब इस सीड के अंदर है तो एम्ब्रियोनिक लीफ कहलाएगा, जब ये बाहर आ जाएगा तो फर्स्ट लीफ कहलाएगा। दिस इज द फर्स्ट लीफ which is called cotyledon. So that was the concept regarding cotyledon. तो आइए चलते हैं, आपके दो चीज़ें आपने यहाँ पर जहन में रखनी है। ऐसे प्लांट्स जो कोटिलेडनी से डाइकोटिलेडनी से बिलोंग करते हैं उनको डाइकोटिलेडनस प्लांट्स कहते हैं। The plants included in monocotyledony are called monocotyledonous plants। ठीक है, और इसी तरह से द प्लांट्स included in dicotyledony which is the subclass of Angiospermae are called dicotyledonous प्लांट्स। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस प्लांट्स। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं इनके कुछ डिफरेंसेस पे, हम इनको कंपैरिजन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट फॉर्म जो मोनोकोटिलेडन्स हैं और मोनोकोटिलेडन से बिलोंग करने वाले इनको मोनोकॉट भी कहते हैं, मोनोकॉट्स, और इनको डाइकॉट्स भी कहते हैं। क्लियर? So here we go. Monocots versus dicots. Clear? So the first comparison between them is of definition. The plants having one cotyledon are called monocots. Clear? And the plants having two cotyledons are called dicots. Clear? So here is one cotyledon, जैसे कि in corn, और इसी तरह से two cotyledons। आपने वो चने देखे ना, चने, ठीक है, तो उसमें
उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। चने के बेसिकली सीड है, इट्स अ सीड, तो इट हैज़ गॉट टू पार्ट्स, इस तरह से, तो इट्स अ डाइकॉट बेसिकली। So that was regarding the definition. Now, the second point is upon the number of sepals and petals. The monocots have 3 sepals or multiples of 3 sepals and petals. क्लियर? तो 3 सेपल और 3 पेटल या फिर 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल का मतलब है 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह करके, यानी कि वो पेटल्स की तादाद होगी। एडिटर साहब ये कट कर दीजिएगा। यहाँ से कंटिन्यू कीजिएगा। मोनोकॉट्स हैव 3 सेपल्स एंड 3 petals or the multiples of 3. Multiples of 3 का मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरह करके। जबकि डाइकॉट्स, the dicots have 4 or 5 sepals and petals or the multiples of 4 और 5। 4 ज़्यादातर 5 या फिर ये होते हैं डाइकॉट्स, और कुछ में बीच में 4 पे वाले भी होते हैं, सेपल और पेटल वाले। तो 4 का मल्टीपल का मतलब 4, 8, 12, 16। 5 के मल्टीपल का मतलब जो उसकी पत्तियाँ ख़ास तौर पर जो पेटल्स हैं 5, 10, 15, 20 इस तरह करके वो मल्टीपल्स होंगे। So 3 petals and 3 sepals। जबकि इनके अंदर usually five petals and 5 sepals इस तरह से होंगे। क्लियर? तो ये इनके वाले से सेपल्स और पेटल्स की डिफ्रेंसिएशन। नाउ द लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ vascular bundle in monocots the vascular bundles, vascular bundle का मतलब मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो जहाँ पे जाइलम होता है उसी के साथ फ्लोएम होता है। द vascular bundles आर स्कैटर्ड, वो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है।
in the stem, जबकि डायकॉट्स के अंदर, in dicots the vascular bundles, मतलब कि xylem and phloem means xylem and phloem are arranged in the form of ring, in the form of rings in the stem, और इसी वजह से इनको फिर सपोर्ट भी मिलती है, डायकॉट्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है. सो लाइक दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ the stem of the monocots. So here is xylem, phloem, xylem, phloem. So it is like this one scattered. जबकि dicots के अंदर the transverse section of ring, the transverse section of ring, in this the xylem and phloem, they are arranged in the form of rings. तो इस तरह रिंग की शक्ल में मौजूद है xylem and phloem. So that is the pattern of arrangement of vascular bundles in dicots and monocots. Now, few more differences. Monocots and dicots. Now the next point is the pattern of venation in monocots. In monocots, there is parallel venation. While in dicots, there are veins and veinlets in network form. ठीक है, वो किस तरह से? Here is a monocot leaf. तो उसमें ये vein like this. This is called as parallel venation. While in dicots, के याद रखिएगा एक तो लीफ भी काफ़ी बड़ा होता है इसका लामिना, ठीक है, और दूसरा इसमें जो वेन्स हैं they are subdivided into veinlets like this. So there is network of veins and veinlets. इसी तरह से there is another point, that is their stem. The monocots, they have only
हर्बेशियस स्टेम, मतलब कि सॉफ्ट स्टेम होती है और इसमें ज़्यादातर कॉलन काइमा टिश्यू होता है, ठीक है, हर्बेशियस स्टेम के अंदर। जबकि डायकॉट्स में देयर इज हर्बेशियस एंड वुडी स्टेम, ठीक है। तो इनकी स्टेम हर्बेशियस भी होती है और वुडी भी होती है। तो हर्बेशियस स्टेम में वुड नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा, हर्बेशियस स्टेम्स के अंदर वुड कंटेंट नहीं होता, जबकि वो जो वुड स्टेम होती है उसमें कैम्बियम मौजूद होती है, ठीक है। इस वजह से वो काफ़ी थिक भी होती हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द प्लांट। ये बड़े होते हैं थोड़े से और ये साइज में भी छोटे होते हैं, ठीक है, और वेट में भी कम होते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ एक्सेसरी पार्ट्स इसमें रेगुलर भी हैं एंड इर्रेगुलर। एक्सेसरी पार्ट्स मतलब सेपल और पेटल्स की बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से डायकॉट्स के अंदर भी जो एक्सेसरी पार्ट्स हैं वो रेगुलर एंड इर्रेगुलर दोनों कंडीशंस में मौजूद है। रेगुलर का मतलब उनकी प्रॉपर सिमेट्री मौजूद है, वो लाइक द पेटल्स हैं तो इस तरह से अरेंज्ड हैं तरीके के साथ विद प्रॉपर सिमेट्री। जबकि इर्रेगुलर में मतलब कि दो पेटल्स इस तरह से हो सकते हैं, तीन इस तरह से हो सकते हैं, ठीक है, ये इर्रेगुलर सिमेट्री कहलाती है। नाउ अनदर पॉइंट दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ द ओवरी, ठीक है, ओवरी की पोजीशन किस तरह से होगी। तो ये फीमेल पार्ट गाइनोशियम, फीमेल पार्ट गाइनोशियम, ज़रा इसको ज़रा गौर से समझ लीजिए। अगर तो जो फ्लोरल पार्ट्स हैं इसके वो इस ओवरी के नीचे से निकल रहे हों, अंडर सरफेस से, सेपल्स एंड एंड्रोशियम, ठीक है, और इस तरह से नीचे वाले सरफेस से, तो ओवरी ऊपर है, बाकी पार्ट्स नीचे से निकल रहे हैं, तो इसको कहते हैं सुपीरियर ओवरी। दिस इज सुपीरियर ओवरी। और अगर ऐसा हो कि ओवरी नीचे और इसकी ऊपर वाली साइड से सेपल्स और स्टेमेन अराइज कर रहे हों, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज inferior ovary. Clear? So this is inferior ovary. Clear? तो मोनोकॉट्स के अंदर भी सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी मौजूद है और डायकॉट्स के अंदर भी सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी मौजूद होती है। तो सुपीरियर ओवरी मतलब जो ओवरी है वो ऊपर और बाकी फ्लोरल पार्ट्स उसके नीचे से, और इन्फीरियर ओवरी का मतलब ओवरी नीचे है और बाकी पार्ट्स ऊपर से, ठीक है। तो ये दोनों तरीके होंगे। और एक लास्ट पॉइंट कि अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, ख़ास तौर पर उसमें याद रखना आपने लास्ट पॉइंट में कि जो ये पेटल्स हैं ये इस तरह से फ्री भी हैं, ठीक है, दे आर फ्री, या इनको इंडिविजुअल भी कहते हैं, या वो फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज्ड होंगे तो उसे कहेंगे गैमोपेटिलस। और इसी तरह से डायकॉट्स के अंदर भी इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स उनमें भी फ्री और फ्यूज्ड दोनों मौजूद होंगे। क्लियर? तो क्लियर, सो दिस आर फ्री और ये फ्यूज्ड है। सो 3 पेटल्स एंड 3 सेपल्स, ठीक है, इसमें, और इसमें 5, यहाँ पर 5 की अरेंजमेंट होती है, रेगुलर, इस तरह से। क्लियर?
सो दिस इज़ गैमोपेटलस, दिस इज़ फ्री और इंडिविजुअल पेटल्स। तो इसमें भी फ्री भी मौजूद हैं, यानी इंडिविजुअल भी, और गैमो, गैमो का मतलब होता है फ्यूज्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे द एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।